The best time to visit Sonmarg, in my opinion, are the months of April, May, June, and September. But then it also depends on what kind of a trip are you looking forward to. In the months of Jan and Feb, Sonmarg remains closed for tourists. Starting from Srinagar, Jan or Feb में, the farthest that you can go is the town of Gagangir. गगनगीर के बाद सड़क बंद रहती है और इन 2 महीनों में आप सोनमर्ग नहीं पहुंच सकते. Sonmarg opens for tourists sometime towards the end of March या फिर early April में. स्नो क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू होता है गगनगिर की तरफ से और डिपेंडिंग ऑन के वेदर कैसा था उस साल कितनी बर्फ़ पड़ी थी, यूजुअली मिड या फिर लेट मार्च तक सोनमर्ग खुल जाता है. लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू वांट टू प्लान अ विंटर ट्रिप टू सोनमर्ग. उस वक्त पूरे टाउन में काफ़ी बर्फ़ रहती है. The entire town is covered in white. So if you want to see snow, then you should plan a trip in March or April. The months of May and June is considered to be a very good time for planning a visit to Sonmarg because इस वक्त weather काफ़ी pleasant होता है. Days will be moderately warm and nights will be pleasantly cold. But at the same time, this is also when Sonmarg receives the highest number of tourists. श्रीनगर ले हाईवे खुल चुका होता है तो लद्दाख की तरफ जाने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस वक्त सोनमर्ग में अपनी जर्नी ब्रेक करते हैं. एंड ऑन अ जनरल बेसिस एज वेल बिकॉज दिस इज़ द टूरिस्ट सीज़न. तो इस वक्त काफ़ी भीड़ मिलेगी आपको सोनमर्ग में. बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप विद योर फैमिली, then May and June will probably be the greatest time to go to Sonmarg. July or August is completely monsoon season. काफ़ी बारिश होती है कश्मीर और सोनमर्ग वाले इलाके में. But at this time the views will be great. पूरा ग्रीनरी होगी, बादल होंगे, and there will be fountains, water streams, वगैरह. So on an overall basis बारिश की वजह से सीनरी काफ़ी improve हो जाती है. But at the same time it poses a risk of landslides and road closures. And अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और बारिश होती रही तो फिर ये भी पॉसिबल है कि आप अपने होटल के कमरे के अंदर ही बैठे रहें और साइट सीइंग के लिए बाहर तो शायद निकल ही ना पाए. September is my favorite time to visit Sonmarg because बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका होता है पर काफ़ी ग्रीनरी होती है and the views are actually great. Weather September में थोड़ा सा kind of ठंडा होना शुरू हो जाता है but since लद्दाख वाला सीज़न भी ख़त्म हो रहा होता है तो इतना ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिलती सोनमर्ग में. So overall it's a good time if you want to get some great views, but also do not want to see Sonmarg as crowded as it would be in the prior months. The best time to visit Sonmarg if you want to see snow is late March and until early April. For pleasant weather, for visiting with your family, and if you just want to enjoy pleasant views, then May, June and September will be a good time.
सीनरी इन माई ओपिनियन सीनरी जुलाई एंड अगस्त में सबसे बेस्ट होती है, बट दीज मंथ्स ऑल्सो पोज अ रिस्क ऑफ रेन, लैंडस्लाइड्स. फॉर अ बजट ट्रिप आई विल रिकमेंड विजिटिंग अ लिटिल लेट इन द सीजन इन अक्टूबर, बिकॉज इस टाइम पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते, सो यू मे बी एबल टू गेट अ बजटेड अकोमोडेशन. बाय नवंबर यूजुअली सोनमर्ग बंद हो चुका होता है. देयर हैव बीन टाइम्स जब ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी, वेदर एक्सट्रीम नहीं हुआ और सोनमर्ग एक्चुअली दिसंबर तक ओपन रहा, बट यूजुअली नवंबर एंड दिसंबर में सोनमर्ग बंद रहता है. नवंबर में शायद आप पहुंच जाएंगे सोनमर्ग, बट वहाँ पर आपको रहने की जगह शायद ना मिले. होटल्स ज़्यादातर बंद हो चुके होते हैं और दिसंबर तक तो यूजुअली टूरिस्ट सीज़न ख़त्म ही हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप नवंबर दिसंबर में सोनमर्ग नहीं जा सकते. डिपेंडिंग ऑन द वेदर यू मे बी एबल टू गो देयर, बट इट इज़ हाईली एडवाइज्ड दैट यू मेक प्रायर अरेंजमेंट्स फॉर योर अकोमोडेशन एज यू मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ होटल ओपन सो लेट इन द सीजन. सोनमर्ग जाते हुए जो एक बात का ख्याल रखना वो ये है कि सैटरडे और संडे इज़ कंसिडर्ड टू बी द ऑफ डेज इन सोनमर्ग. What this necessarily means इसके लोकल टूरिस्ट जो श्रीनगर के हैं वो सैटरडे और संडे को सोनमर्ग जाके शाम को वापस नहीं आ सकते. अगर आपका ये प्लान है तो कहीं कंगन के आसपास पुलिस वाले आपको रोकेंगे और वापस भेज देंगे. सो इफ़ यू वांट टू प्लान अ डे ट्रिप जहाँ पर आप सुबह श्रीनगर से निकल के सोनमर्ग जाके घूम के शाम को वापस आना चाहते हैं, दैन यू हैव टू डू इट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. अगर आप सैटरडे और संडे को सोनमर्ग जा रहे हैं then you will have to book your hotel in advance और आपको एक ईमेल में अपने फ़ोन में एक बुकिंग कॉन्फर्मेशन लेके चलनी पड़ेगी, बिकॉज़ आपको पुलिस वाले बीच में रोकेंगे और आपको फिर अपने होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी. उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा. सैटरडे और संडे को सोनमर्ग में सिर्फ वही लोग अलाउड होते हैं जो या तो रात को सोनमर्ग में रुक कर अगले दिन वापस आ रहे हैं या फिर वो आगे कारगिल और लेह की तरफ जा रहे हैं.